Okay, chalo. Now the next topic after we have all the information how to create a class, to create an object, comes another concept that is called as constructors. Now, children, if you have noticed the class that we create, we just mention the name of the variable, int marks, int roll number. I cannot initialize int marks is equal to 0. If I try to write down like this in the declaration of the class in the private section, it will be an error. Why? Because the initialization is not acceptable where my declaration is done in the class. For initialization, I need to create another function that is called as a constructor. So constructor is a function, but it is a special function. Why is it called as a special function? Because it is a member function with the same name of that of the class. So we can identify a normal member function and a constructor. A normal member function will have any name, and a constructor will have the name of that of the class. Okay? And the name constructor, from the name we understand, constructor is that function which will construct, it will initialize the objects of the class. Basically, what is the object? It is a instance, or in a very simple explanation we'll say that it is a variable of the type class. So variable है, that means उसको memory चाहिए. तो memory allocate करने के लिए constructor is called. Why am I using the word called here? Because constructor is a function. The function has to be called. The fourth point here says is constructor is automatically called when the object is created. Now here in this point, there's a twist in this point. It is automatically called only when I have the next screen will tell me default constructor. Now here we have two types of constructors. In your curriculum we have two, otherwise we have three types of constructors. तो अगर आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ओनली देन whenever an object is created, कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है, अपने आप कॉल होगा क्योंकि डिफॉल्ट है. But if we have to talk about the other type of constructor, then we'll see how that type of constructor is written. Okay, so iska question children aata hai, what is a constructor, what are the characteristics, and we also have programs, 3 programs related to it in the practical type the programs also. Now look at the default constructor, which accepts no parameters. That means nothing in the braces, in the parentheses, nothing. That is called as a default constructor. Now look at the example on the left hand side. The class name is student, and inside the student class I have created a function whose name is student. So student और student सेम है. दैट मीन्स मैं ये क्या बना रही हूँ, एक कंस्ट्रक्टर बना रही हूँ. इसमें कोई भी पैरामीटर्स नहीं है. दैट मीन्स इट इज अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. ठीक है. And on the other side, look at the second example. The name of the class is test. I have two data members, M and N. Private है. Public test. Again, the function name is test. That means it's a constructor. And in this constructor, I am just initializing the data members as 0. M is equal to 0, N is equal to 0. This thing that I said cannot be written here. That is not in the syntax. It will be wrong. It will be syntactically wrong. अगर आपको कोई वैल्यू वेरिएबल को असाइन करना है, डेटा मेंबर, नॉट द वेरिएबल हियर,
डेटा मेंबर को असाइन करना है, दैट वैल्यू कैन ओनली बी असाइंड इन अ कंस्ट्रक्टर, रिमेंबर दिस ऑलवेज। ठीक है, अभी हम मेन में हमने टेस्ट का t1 एक ऑब्जेक्ट बनाया। द मोमेंट आई हैव रिटन दिस स्टेटमेंट टेस्ट t1, दैट मीन्स वेयर आई एम क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, माय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड मीन्स व्हाट, मेरा m और n जीरो इनिशियलाइज हो गए। The values, the initial values for my data members have been given as 0. ठीक है, this is what I mean as default constructor. हमने ये लिखा भी नहीं है पिछले प्रोग्राम में। कंस्ट्रक्टर हमने लास्ट प्रोग्राम, द एग्जांपल दैट वी हैड टेकन लास्ट वीडियो में, we did not write down m is equal to 0, n is equal to 0 anywhere. Even then the default constructor will be called and the values will be initialized as 0. Okay, this is the meaning of the word अपने आप automatically invoke होता है वो the moment I create the object. ठीक है, next another example of a default constructor, children. Name of the class is cube. In public I have written side, which should not be in public. Private है वैसे, ये error है. Private int side, public में एक function है cube. That means it's a constructor because it's same name as that of the class. And in constructor I can write down side is equal to 10. I can assign a value to the data member only in a constructor, and constructor is a function, special function which has the same name as that of the class. तो यहाँ पे अब cube c जैसे मैंने ये स्टेटमेंट लिखा, what happened, the default constructor has been invoked, और जब वो invoke हुआ है that means this function is called. cube को call कर लिया मैंने, अब मैंने कॉल किया है तो आई कैन राइट डाउन वैल्यू इज c डॉट साइड। पब्लिक लिया हुआ एक्चुअली, तभी साइड डिस्प्ले कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, ओके, लेट्स सी अनदर एग्जांपल। अगेन हियर रोल नंबर, नेम एंड क्लास आर द डेटा मेंबर्स। स्टूडेंट हमारा कंस्ट्रक्टर है और यहाँ पे हमने वैल्यूज असाइन किया है डेटा मेंबर्स को। That means it's a default constructor. Default why? Because it does not have anything inside the parameter, inside these parentheses. That is why default. Parentheses के बीच में कुछ होगा तो उसको parameterized constructor बोलेंगे हम। ठीक है, so we come to that parameterized constructor that receive arguments or have parameters is called as the parameterized constructor. ये भी constructor at the time of the object you are creating, it gets executed, but the way it will be called will be different. We'll see how we'll be calling the parameterized constructor. अब क्योंकि वो parameterized है, that means जब हम उस function को call करेंगे, हमें parameters को we have to pass the values along with the object, because we said the moment the object is created the constructor is called. अब यहाँ पे हमारा constructor कौन सा है, parameterized, so the at the time of the creation of the object only I'll be calling the constructor by passing the values. We'll see the example. यहाँ पे देखो, side हमारा डेटा मेंबर है, क्यूब हमारा कंस्ट्रक्टर है क्योंकि क्लास का नाम भी क्यूब है, बट हियर आई एम पासिंग अ पैरामीटर, ये देखो। ठीक है, और उसकी वैल्यू मैंने साइड में डिस्प्ले कर दी है, साइड में वैल्यू हैज बीन पास्ड ऑन। so this is the way I will pass my argument of the parameterized constructor. अब cube
C1 यहाँ तक लिखते थे हम, C1 एक ऑब्जेक्ट बन जाता है, बट इस ऑब्जेक्ट के साथ मुझे फंक्शन कॉल कर रही हूँ मैं, बिकॉज कंस्ट्रक्टर है, द फंक्शन इज बीइंग कॉल्ड, और डिफॉल्ट फंक्शन था तो हमें कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं भेजना था, बट हियर माय कंस्ट्रक्टर इज अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, and at the time of the creation of the object only my constructor is being called. So at the time of the creation of the object only I have to send this argument. C1 से पहला ऑब्जेक्ट बन रहा है और एक वैल्यू जा रही है, C2 से दूसरा ऑब्जेक्ट बन रहा है, दूसरी वैल्यू जा रही है, C3 से तीसरा ऑब्जेक्ट बन रहा है और तीसरी वैल्यू जा रही है. If you do not pass these values it will be a mismatch. Why mismatch? Because आप जो फंक्शन कॉल कर रहे हो C1 जब बन रहा है, आप फंक्शन कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हो जो पैरामीटराइज्ड है, लेकिन आप वैल्यू ही नहीं दे रहे हो उसके पैरामीटर के लिए, तो दैट विल बी कॉल्ड एज अ mismatch. Okay children, another example, see how we are writing down the parameters int r, string nm, float m, and passing these values and equating these values with the data members, ताकि जो नीचे से values हमें मिले, ये तो लोकल वेरिएबल्स है, फंक्शन के वेरिएबल्स हैं, और फंक्शन क्या है, कंस्ट्रक्टर है. फ्रॉम दिस constructor these values should be passed on to my data members. So these statements are telling me that the value that I'll be passing while I'm writing down main, like if I write down 10 as roll number, name as B, एंड फ्लोट एज फ्लोट में मार्क्स लिखूं 45, तो रोल नंबर, नेम और मार्क्स जब हम प्रिंट करेंगे तो 10 B and 45 will be printed, because from the arguments I have received them in name, roll number and marks, the data variables, the data members which are called as. ठीक है. Again children, another example, test is a constructor because it's the name of the class, two variables in the constructor, so that means it's a parameterized constructor. इन वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम और एक नया फंक्शन बना रहे हैं नाउ. ठीक है, सो आई हैव क्रिएटेड अ न्यू फंक्शन वेयर आई एम शोइंग द रिजल्ट. तो यहाँ टेस्ट टी 10, टू वेरिएबल्स आर आस्क्ड ना, ए में 10 जाएगा, बी में 10 जाएगा और ए और बी में मल्टीप्लाई होगा शो फंक्शन में टी डॉट शो. तो क्या डिफरेंस क्या आ जाएगा हमारा, प्लेइंग शो फंक्शन, द डेटा ऑफ द शो फंक्शन. ठीक है. अब चिल्ड्रन, in the parameterized constructor we saw this is again an example of a parameterized constructor. We saw the values that are passed in this manner. This is called as implicit calling of the constructor, and this is the most used method of calling of the constructor. Implicit method, wherein this is the syntax, name of the class, name of the function, सॉरी नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्लास के बाद तो हमेशा ऑब्जेक्ट ही आता है, क्लास ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, और हम उसको एक्सप्लिसिटली हेल्प ऑफ ऐड एंड फंक्शन अगेन. one of the method only not the default constructor. Default constructor can be called like this because to send the values I have to pass on the values. डिफॉल्ट तो मैंने ऐड सम लिखा तो मेरा कॉल हो गया, because add class as sum is my default constructor has been called.
पैरामीटराइज्ड विल वेट फॉर द पैरामीटर्स. सो आप उसको एक्सप्लिसिटली दे रहे हैं कि इम्प्लिसिटली दे रहे हैं, दैट डिपेंड्स हाउ आर यू. Now children, the question comes, what is it? Learn these characteristics. 3 marks question, so at least 6 characters have to be learned and written. It is always declared in the public section of the class. You cannot make a constructor as a private function because it has to be called from outside the class. It has to be called by the object. So it cannot be a private member of the class. It does not have any return or not. हमने student लिखा सिर्फ, test लिखा सिर्फ, void student नहीं लिखा, void test नहीं लिखा था, because it cannot, syntax में आता ही नहीं है return type. We cannot even write on void. ठीक है? It is automatically called when the function is created, called explicitly, that you've seen. It can take parameters, it can have default value, and it can be overloaded. ये overloading हम next topic पढ़ेंगे. Understand what we mean by the word loading. But these are the points that you have to know for a constructor. Now comes children, after constructor there is also a function called as destructor. Again, on the same lines of constructor, constructor memory allocate करता है object को. So from the name you understand that destructor deallocates the memory when the object does not require the memory, because it has to be freed for the other purposes also. So again, it is also a special function which is same as that the name of the class. तो दोनों में difference क्या है? दोनों में difference है इस symbol का. Can you see the symbol here? This is called tilde. So अगर आपने tilde लगाया है अपने function के आगे, it becomes a constructor. Sorry, very sorry, it's a destructor. And अगर tilde नहीं होगा तो क्या बनेगा? ये एक constructor बन जाएगा. Unlike a constructor, a destructor cannot have parameters. Okay? It cannot have any sort of parameters. I cannot pass any value through a destructor. So it is used to destroy the objects. Destroy the objects का मतलब है यहाँ पे जो objects ने memory को allocate किया हुआ है for their usage, that memory has to be deallocated. Destroy object मतलब ये नहीं है कि object को खत्म कर देता है. वो खत्म करने का मतलब यहाँ पे है memory release करता है. So like a constructor, this is also a special member function. Name is same as that of the class, but is preceded by a tilde. An example, integer is the name of the class and tilde is the symbol that I have written before the name of the destructor, which makes it a destructor. Example for a destructor, children. Side data member है, public, again this can also be called in public only. क्यूब हमारा कंस्ट्रक्टर है, हमने सी आउट लिखा, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड. तो अब जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे ना, ये डिस्प्ले होगा कंस्ट्रक्टर कॉल्ड. और जैसे ही आप प्रोग्राम को बंद करोगे, डिस्ट्रक्टर कॉल्ड विल आल्सो बी डिस्प्लेड. So hence we'll come to know that my destructor has also been called and my constructor also has been called. Here it is a default constructor that we are calling. Remember, कोई पैरामीटर्स नहीं है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है. तो मेन में जब भी मैं लिखूंगी क्यूब लेट्स से सी, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, मेरा आउटपुट आ जाएगा कंस्ट्रक्टर कॉल्ड. ठीक है, और प्रोग्राम खत्म करेंगे हम तो हमें डिस्प्ले करेंगे क्या? डिस्ट्रक्टर कॉल. थैंक यू चिल्ड्रन.